हेलो अस्सलाम वालेकुम सर।
सर आवाज नहीं आ रही सर। हेलो सर। हेलो। हेलो। हाँ हेलो सर। आ रही मेरी आवाज आपको? हाँ हमारी आवाज आ रही सर। अभी एक मिनट और एक बार चेक करें। अभी अभी आ रही? हाँ आ रही सर आ रही। ओके। यस। कल का जो प्रॉब्लम था वही कंटिन्यू कर रहे, देखिए अब रेशियो टेस्ट का क्वेश्चन है। जी हाँ। ठीक है। सो वी हैव टू पुट दिस एक्स वैल्यू इज इक्वल टू 1 here in place of un. So now our un becomes, if x is equal to 1, 1 to the power of n is anything is 1 only. So this means 1 by n into n plus 1 is our un value. Now if un is this one, if un is this one, then we have to find out vn value. Vn is equals to, what is that? Highest power of n from numerator is nothing, is there, 1. Denominator we have 2 powers of n, it means n square. Now let us take apply limit n tends to infinity for un by vn value. Limit n tends to infinity un by vn, which is also equal to limit n tends to infinite. Our un value is this one, 1 by n is there here, this part. I want to take another n common. It means it becomes n square, 1 plus 1 by n. And the second fraction, which is called vn, becomes reverse. It's n square by 1. Okay. So this n square cancelling with this n square. Now once if you apply the limit wherever 1 by n is there, this part will become 0. So then we are left with some value which is called a finite value. That finite value is 1. Okay, now this is finite value 1. It is a finite value. Then we have to write our statement, of limit comparison test. Here I am writing, let us see, by limit comparison test summation vn and summation un behave behave same behave same, but but summation vn, what is summation vn? Yeah, what is summation vn here? But summation vn is equals to, 1/n²। exactly, अब दिया आवाज आप 1 by n square. This will be comparing with our helping test टू p, बाई एन। n power p से compare करें. It means that our value of p is 2. P value 2 means definitely, what do you say, it is greater than 1. So by p कन्वर्ट test, जस्ट। by p test by p test
summation, next line में लिखिए summation vn convergent, summation vn convergent. इसका मतलब है it means that summation un also convergent by limit comparison. Summation un also convergent. So we did not stop here. We have to complete this problem like finish like that. Hence given series convergent, given series convergent कौन से केसेस में हो रहा है देखिए यहाँ पे ऑलरेडी अपन क्या बोले लेस देन में बोले और यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर इक्वल टू वन भी ये इक्वल टू वन यहाँ पे रखे ना अपन यहाँ पे लिखना मैं भूल गया इफ एक्स इज इक्वल टू वन में भी कन्वर्जेंट हो गया लेस देन में भी हो गया मतलब और थोड़ा कलरफुल करेंगे इसमें एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वन and the same thing will become divergent. It is becomes divergent if if x is greater than. This is a perfect answer of this problem. लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा था उससे रिलेटेड है रेशियो टेस्ट. सर ये जी डीएल मार्ट रेशियो टेस्ट में ये टेस्ट फेल हुआ. हाँ टेस्ट फेल हुआ ना या लिखे देखो भाई रेशियो टेस्ट लिखे ना फेल हुआ बल्कि अपन इसको क्या करें आगे जाके लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से कंप्लीट कर दिया. ठीक है एक ओके और सर. क्वेश्चन करेंगे. स्टूडेंट्स तो कोई दूसरे तो ज्वाइन कर रहे नहीं. आई डोंट नो व्हाई दे डोंट वांट टू ज्वाइन. मैं तो कंटिन्यू करता हूँ और एक प्रॉब्लम से. So now the second question we have to discuss is test the convergence of. The question is x plus 3 by 5 into x square plus 8 by 10 into x cube plus 15 by 17 into x to the power of 4 plus and so on. और यहाँ पे आपको nth टर्म भी दिया हुआ है क्वेश्चन में. इट इज n स्क्वायर minus 1 x power n divided by n square plus 1. So we need not to worried about it because nth term is there. Already nth term है आपके पास. तो simple solution हो जाएगा इसका. Because complication arises when nth term is not there. But unfortunately you have nth term here. सर You वो अशरफ मैसेज करे सर वेटिंग रूम में है बोल के. कायका वेटिंग रूम में जी मेरे को तो एकदम मैसेज भी आया ही नहीं. उनका क्या मसला है कि पता नहीं. हाँ अभी कर रहा हूँ मैं उनको ज्वाइन कर रहा हूँ. उनका कुछ प्रॉब्लम है. आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम ही इज फेसिंग बट अभी तो मैं उनको ज्वाइन किया. un is there in this question so we need not to worried about un is there. It is like that n square minus 1 into x power n divided by n square plus 1. Once if you got un value now immediately
The next moment, you have to find out un plus 1, which is equal to wherever n is there, we simply write एक काम करेंगे ना नीचे लिखेंगे ऐसे केस नहीं un plus 1 is equal to wherever n is there we write it as n plus 1. It's a square, so square we have to write minus 1 we have to write bracket close, and x n value is n plus 1 here divided by n value is again n plus 1, square is there, we write it as square, and then plus 1. Now the second step we have to move on, that is we have to find the value of un by un plus 1. Un is this one, that's n square minus 1 into x power n divided by n square plus 1. That's multiplied by second fraction will become reverse. That's n plus 1 whole square plus 1. The denominator, that's a reverse. So it's here like that. N plus 1 whole square minus 1. This bracket will be closed. And x power n plus 1, we have to write it as x power n into x power 1. And some of the terms are cancelled like this one. This with this cancel. Then after this one, if you noticed, the terms which are left now, उसमें से आपको कुछ n स्क्वायर वाले टर्म को सिंप्लीफाई करके निकालना है बाहर, ठीक है ना? तो कैसा होगा ये देखिए आप, un by un plus 1 value that is equal to, here if you want to take n square common, no, it becomes like that, 1 minus 1 by n square, and denominator also this same story, n square common, 1 plus 1 by n square, close it, multiply by, from here also we are going to take n square common, so n square common from the square term means it will be like that, plus 1 by n squared plus 1 divided by, यहाँ से भी वही सेम काम करना है आपको, मीन्स n स्क्वायर कॉमन 1 plus 1 by n whole square, that's a minus 1 into, don't forget here we have one x term, until don't disturb, go from here, don't disturb. Abdul Bari, come here, sit here. Un by un plus 1 value, it is equal to, now here you see once again these two terms are cancelled, and here in this part, in this side is left 1 by 1, 1 by 1 minus x square divided by 1 plus 1 by n square, don't try to cancel it, these are the different terms, into, I want to take n square common from this all, n square common from this all means it will be like that, that's 1 plus 1 by n square will be there, is there, let us keep it. यहाँ से अगर आप 1 by n square को कॉमन ले रहे, इसका मतलब है you are dividing with 1 by n square, and the denominator also will have the same story, n square common, I want to take aggregate, so it will be 1 plus 1 by n, it's a squared, right, minus 1 by n square, because we have taken overall n square common, this is multiplied by 1 by x is there, let us keep it. Now taking limit n tends to infinity, taking limit n tends to infinity on both sides, so it is
limit n tends to infinite un by un plus 1 value, it is equal to, we have to take the term which are not having n outside, and then we have to apply the limit for rest of the terms. Limit n tends to infinite 1 minus 1 by n square divided by 1 plus 1 by n square into, here also this is the part which are we are not cancelling, this one we have to cancel it. Then continuing 1 plus 1 by n square, sorry, not here, that's a whole square, plus 1 by n square divided by 1 plus 1 by n whole square minus 1 by n square. And as I apply the limit, apply limit. So if as n tends to infinity, these are the terms which are become 0. This is 0. This is 0. This part will become 0. This part will become 0. This part will become 0. And this part will become 0. So finally, आप यहाँ पे देख सकते हैं what is left of. The left of term is this one, 1 by x. Now write down the statement by ratio test. By ratio test, Abdul Bari, Abdul Bari, if 1 by x greater than 1, which implies that x is less than 1, then converge. Abdul Bari, come here. Less than 1, which implies that x is greater than 1, then diverge. And the third line, if 1 by x is equal to 1, implies that x is equal to 1, test fails. Test fails. So now we have to avoid this possibility. It means what happened when x is equal to 1, we have to check. If x is equal to 1, directly we take this value and put it here in place of un. So our un clearly becomes, if x is 1, it is becomes n square minus 1 divided by, Abdul Bari, come here, n square plus 1. Now from here it is convenient to take vn. Okay. अच्छा, यहाँ पे एक काम कर सकते हैं अपन, इसका थोड़ा सा शॉर्टकट हो जाता है, ये प्रॉब्लम जो है थोड़ा सा अलग है, इट्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो रहा है, बिकॉज न्यूमरेटर एन वैल्यू, डिनोमिनेटर एन वैल्यू दोनों भी सेम ही हो रहे, तो वी एन वी आर अनेबल टू डिसाइड. अगर आप वी एन लिए तो वी एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आता है. उससे अच्छा आप एक काम कर लेना, इसी को लिमिट अप्लाई कर लेना दोनों सेट्स. यू एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर कॉमन. अमतुर रहमान, कम हियर. अमतुल, एन स्क्वायर कॉमन 1 plus 1 by n square. Cancel it and then apply limit. अब इस चाहे तो रेवी टेस्ट से भी कर सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो रहा ना,
but we have not discussed the Rabi test, so then we will discuss later on. Rabi test से करने से process बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, एक shortcut use कर ले रहे हैं अपन. Limit n tends to infinity 1 minus 1 by n square divided by 1 plus 1 by n square. So we know that when n tends to 0, n tends to infinity, 1 by n tends to 0. So these are the parts which are completely become 0. So our answer is 1. Okay. Therefore, 1 is greater than 0. 1 is greater than 0. Therefore, directly we can say that summation un converges. क्यों बोल रहे डायरेक्टली? क्योंकि अपन vn तो लिए इसमें, अगर लेस देन 0 आता तो फिर डाइवर्जेंट बोलते, सॉरी नॉट कन्वर्जेंट, इट्स अ डाइवर्जेंट. ग्रेटर देन 0 है ना, बराबर ही. सो कन्वर्जेंट. So hence, given series convergent. दो केसेस में हो रहा होगा. कहाँ पे हो रहा? एक केस तो ये था लेस देन वाला, और दूसरा अपने पास इक्वल टू वाला में भी आ गया. सो वी से दैट इट इज x इज लेस देन और इक्वल टू 1. और उसके बाद जो दूसरा केस है वो डाइवर्जेंट. डाइवर्जेंट अगर आपके पास एक सर एक बार फिर से समझाओ ना. जी, कौन सा शुरू से? हाँ शुरू सर. से. ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो गया. एक बार शुरू से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको. ओके ठीक. अब भाई साहब अब आना चाह रहे हैं. un value is n square minus 1. ये this one un value is n square minus 1 x power n by n square plus 1. ये already un value आपके पास है. Now from un we have to find out un plus 1 value. That is wherever n is there we have to put n plus 1. Then square it. यहाँ पे n है वहाँ पे n plus 1 रखें. यहाँ पे n है n plus 1 रखें. Then step number 2 we have to move. That is un by un plus 1 value. The un is this one. We have to write un plus 1 is this one. But we have to write fraction by fraction. No? Directly I wrote the second fraction in a reciprocal form. Then after that, go to n square common from here. So you know the process. Yesterday we said n square अगर common ले रहे, इसका मतलब आप n square से divide कर, पूरा को n square से divide कर, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर. यहाँ पे भी स्क्वायर टर्म में से n square common ले लेना, इधर में भी स्क्वायर टर्म में से n square common ले. And this is excellent. उसके बाद ये n square न्यूमरेटर में से इधर से भी ओवरऑल कॉमन ले लीजिए. n square अब यहाँ देखिए आप लिमिट अप्लाई करने से पहले कोई भी n वाला टर्म इसमें नहीं दिखता, तो कहीं भी दिख रहा है आपको नहीं दिख. तो अप्लाई करिए लिमिट. then our answer is 1 by x. So we say that if 1 by x is greater than 1, x is less than 1, convergent. Less than 1, greater than 1, divergent. ये less than है, कल करे थे अपन ऑलरेडी. टेस्ट फेल्स, x is equal to 1 we have to put here. यहाँ से थोड़ा सा टिपिकलिटी क्या होता प्रॉब्लम, vn अपन अनेबल टू चूज है. ऐसे ये प्रॉब्लम को यहाँ से रेबी टेस्ट से भी कर सकते हैं, बट वो बहुत लेंदी हो जा रहा है, तो इसलिए मैं एक शॉर्टकट यूज कर लिया. क्या यूज कर रहा है, यहाँ से डायरेक्ट मैं लिमिट अप्लाई कर दिया. डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें, आंसर ग्रेटर देन 0 आ. ग्रेटर देन 0 मींस कन्वर्जेंट, लेस देन 0 मींस डाइवर्जेंट. So directly we say that the given series convergent if x is already we said we are less than, and we have proved that it is equal to 1 also convergent. So finally convergent divergent is x is equal to 1. तो ये थी आपकी क्लास रेशो टेस्ट की. इसके रिकॉर्डिंग आपको क्लास में मिल जाएंगे अभी थोड़ी देर में. आप एक बार फिर से देख लीजिए जो भी मिस करें. थैंक यू.